your punches that hurt. Abhishek, you can turn off your video. Thank you. Hello students, how are you all? कैसे हैं सब? Please comment down. So this session will be all about the simple interest and compound interest. Okay. So the session will be all about the simple interest and compound interest. I'll tell you about the basics of the topic and some previous year questions which have been there in the IPMAT exam, both Rohtak and Indore. So if you have your own friends, please call them up. They can also attend the session.
So the students are still joining. I'll just wait for a couple more minutes. Let's wait for another 2 minutes and then we'll start the session at 4:05. Let other people also join the session. Till the time, please comment down how many of you are preparing for 2021 or 22. Please comment down below whichever year you guys are preparing for. I want to see the comment guys. तभी मैं पढ़ा पाऊंगा, तभी मुझे पता चलेगा कौन 21 के लिए prepare कर रहा है, कौन 22 के लिए. उसी according the session will flow. Please comment down. Okay, Gurleen 21, 21. Yes, Ananya, I know 21. Okay, great. So a lot of you are for 2021 batch. Amazing. Totally fine. I'm preparing for 2022. Okay, Abhishek. Which course, CLAT or IPM, Abhishek? Gourmet below 22. Okay. Please also comment whichever exam you're preparing for. So many of the students can be preparing for IPM or CLAT. So please comment on your exam as well. DUJAT. Okay. Okay, DUJAT, IPM, IPM, IPM. A lot of students are for IPM only. Okay. Okay, I hope you all can see my screen. Please comment down if you can see my screen. I cannot see you guys chatting. Okay, fine. Now it's there. Cool. Okay, let's get on with our session now. Dishonest and immoral man. So if he's a negative person, Abhishek, can you please turn off your video or audio as well? Okay, so let me introduce myself. I am Engineer Ankur Goyal. I completed my Masters of Technology degree in Civil Engineering. I'm an All India rank holder in National GATE exam twice. I've worked on projects with IIT Roorkee and IIT Delhi, and I've counseled over thousands of students for their career orientation. Let's get on with our session now. So first of all, what is simple interest? The simple interest can be defined as the principal amount or loan or a deposit a person makes into their bank. So सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सिंपली वो उसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज P into R into T upon 100. That is P is the principal amount जो आपने borrow किया है, R is the rate of interest at the which rate you have borrowed the amount, and time is the time period over here. Similarly, when I talk about the compound interest, it is simply the interest that accumulates and compounds over the principal amount. I'll tell the difference between both of them. Now, in easy words, अगर मैं देखूं, so what is compound interest? It can be said as interest on interest. It makes a deposit or loan grow faster as compared to simple interest. So definitely the concept is also a bit complicated than simple interest for the compound interest. The interest at which compound interest accumulates depends upon the frequency of compounding. More the number of compounding periods, the greater will be the compound interest. Okay. So this is the theory about both the simple interest and compound interest. So this is the formula for compound interest where P is the principal, 1 plus R by 100 whole to the bracket raised to the power n is the number of years, the time period.
Okay. Now, here is the difference between the simple interest and compound interest. So as per definition, the simple interest can be defined as sum paid back for using the borrowed money over a fixed period of time. Whereas in the compound interest, it can be defined as when the sum principal amount exceeds the due date for payment along with the rate of interest for a period of time. Both the formulas I've shown in the previous slide as well. This is the return amount. The return is much lesser when compared to compound interest, and here the return is much higher when compared to the simple interest. The principal amount is always constant. The principal amount keeps on varying during the entire borrowing period. Now अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं तो व्हाट इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका एक प्रिंसिपल होता है, ओवर द ईयर योर इंटरेस्ट नेवर चेंजेस. तो अगर एक साल का आपका इंटरेस्ट इज 100 रुपीज, वो नेक्स्ट ईयर भी आपका 100 ही रहेगा. सो नथिंग इज चेंजिंग. बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अगर मैं बात करता हूँ 10% इंटरेस्ट था, तो 100 का 10% इज 110. सिंपल इंटरेस्ट के वर्ल्ड में वो 10 रुपीज आपका ऐड हो जाएगा. जब आप उसको अगले साल के लिए करोगे तो अगेन योर प्रिंसिपल वुड बी 100 ओनली. बट व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट, सो द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर will be 110. So this is the difference between the compound interest and the simple interest. Okay. Now the interest charged is on the principal amount, and in the compound interest, the interest charged on it for the principal and accumulated interest. यही उसका मतलब है कि अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो वहां पे सिर्फ आपका एक प्रिंसिपल था. बट अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वहां पे प्रिंसिपल के साथ जो आपका इंटरेस्ट ऐड हुआ, अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल हम उसको बोलते हैं जो टोटल हमारा ऐड हुआ इंटरेस्ट एज वेल एज द ओरिजिनल प्रिंसिपल. सो दैट इज इट. ओके. एनी डाउट स्टिल नाउ? प्लीज कमेंट डाउन. Say no if you don't have any doubt. Akriti ma'am is there to guide you. If you have any doubts, if I'm not able to read your chat, she'll tell me all your queries. Gurleen says no. Okay. Okay. No. Okay. Great. Okay. Fine. Moving on. Now, the interest for the first month is same in both simple interest and compound interest. From second month, the interest starts changing. जैसे मैंने आपको बताया कि second month से चीजें बदलती हैं. The formula for compound amount is P1 plus R is 100. ये है जब हमारा compounded annually होता है. So there can be 2 to 3 different cases. मैं सारे cases अभी आपको बताऊंगा. So the first case is when our amount is compounded annually. So we will use this formula. The next thing can be when the money is compounded half yearly. What we have to do? We have to divide the rate by 2 and we have to multiply the number of years by 2. So अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिखता है that the money is compounded half yearly, at that point you can just do this. Rate को half करना है and time period को double करना है. That is all that is required. Similarly, अगर compounded monthly होगा, monthly में आपको a year has 12 months. So divide by 12 and multiply it by 12 into the number of years, whatever term it is given over there. Months हो सकते हैं, years हो सकते हैं, आपको वहां पे 12 से multiply करना होगा. Okay. Also, amount is equals to compound interest plus principal. That is a basic rule. Now here all the definitions are there. What is principal? What is rate? What is time period? Note, the above formula A equals to CI plus P will give us total amount. To get the compound interest only, we need to subtract the principal from the amount. अगर हमें compound interest निकालना है, so definitely we have to subtract the principal from the amount. वो हमें यहाँ पे direct formula में दिख ही रहा है. A equals to CI plus P में. Okay, let me see if there are any comments on YouTube as well. I don't think so. Everyone is fine on YouTube, I believe. Yes. Maham Hassan is for CAT 2021. Please record this session and post on YouTube. For sure, Rahul, this session is already being recorded and this will be on YouTube. No issues. You can watch it later as well. Okay, Rajesh, 2021. Great. Okay, now let's get on with the questions now. So for the amount in compound interest. Okay, I have a doubt. Okay. Yes, Abhishek, in compound interest, please tell me what's your doubt. Abhishek, please type down your doubt, whatever doubt you're having in compound interest. Sir, I can't understand. Okay. So just for Abhishek, I'm again giving out the concept. So Abhishek, in simple interest,
अगर मेरे पास आज 100 रुपए हैं and if I want to take 10% interest on that, so for the next year my interest would be 10 rupees only. That will make the whole amount as 110. But for the second year, again in the simple interest if I'm taking, so again it will be 10 rupees only. So now total amount is 120. But in case of compound interest, आपका principal change होता है. So P into R into T upon 100 में you will always keep the principal as 100. You will keep the rate as 10 and time period will increase. So 1, 2, 3, this will increase. But in compound interest, your P will change after 1 year. So your P will be 110. After the second year, it would be 121. So just like this, आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता है. प्रिंसिपल चेंज होगा डेफिनेटली तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा आएगा. एक अमाउंट आपका बढ़ रहा है उसको मल्टीप्लाई करोगे आप रेट से, मल्टीप्लाई करोगे टाइम से, तो हमेशा ज्यादा ही आएगा. सो दैट इज व्हाई कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा रहता है सिंपल इंटरेस्ट से. आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा. अभिषेक, प्लीज कमेंट डाउन. अभिषेक. Okay. So this question was already on the screen. Find the amount if rupees 20,000 invested at 10% per annum for 3 years. Please try to solve this question. Sorry. Gurleen says 26,000. Raja is saying 26,000. Okay. Manar is also saying 26,000. Yes, that's correct. So a very basic question using the formula equals to P1 plus R by 100 raised to the power N. You're just putting all the values that are available to in the question and you're getting the answer to us 26,000. Okay. If the CI is rupees 100 was invested for 1.5 years at 20% per annum, compounded half yearly. Now you have to calculate. Now see, just you have to put the values and get the answer. That is it. You don't need to do anything apart from this. Okay. Moving on. Now, the CI on a sum of rupees 625 in 2 years is rupees 51. Find the ratio of interest. I will tell you different type of questions. जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता, तो मैं आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा इस सेशन में कि जहां पे मैं आपको प्रिंसिपल रेट और टाइम दे दूंगा एंड यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दी ऑल थ्री ऑफ दीज थिंग्स. नहीं, मैं आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा. मैं कुछ वो क्वेश्चंस कराऊंगा इस सेशन में जो आपके पिछले साल आईपीएम में पूछे गए हैं. It was guys there to help you out. We are already trying our best and we have a one-to-one session as well going on. So if any of the student who is feeling कि हाँ मुझे थोड़ी काउंसलिंग की नीड है, प्लीज कनेक्ट टू आकृति मैम. वो अपना नंबर कॉन्स्टेंटली चैट में आपको दे रहे हैं. कनेक्ट टू हर एंड यू कैन गेट बैक टू मी. I will take up your session and then we'll go ahead. Okay. So now the CI on a sum of rupees 625 in 2 years is rupees 51. Find the rate of interest. Ananya is saying 4%. Let's see, Ananya. Let others also try this question. Then I'll get to the answer. Other students also, please try this question. Anyone else want to try this question apart from Ananya? Manar says 4%. Okay. Anyone else with a different answer? Okay, let's get on to the answer now. Yes, it is 4% only. We know that amount is equals to CI plus P. Just putting the value, you'll get to the answer as 676. Going with the formula, again, put all the values that are available to you and just get to the answer with the rate as 4%. Any student who has doubt till now, up till this question, please comment. Look on the screen. You have the solution in front of you. Understand it. And if you have any doubt, please comment down. I'll see to it.
Any doubt, students? Please comment down. Otherwise, I'll proceed forward. Okay, moving on then. The next question. The difference in simple interest and compound interest on a certain sum of money in 2 years at 10% per annum is rupees 50. So हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमें नहीं बताया, बट हमें एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस, तो जो भी इंटरेस्ट होगा उसका डिफरेंस हमें दिया, दैट इज 50 रुपीज. हमें टाइम पीरियड दिया है, हमें रेट दिया है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वो प्रिंसिपल क्या था. ट्राई दिस. दोनों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुट द वैल्यूज एंड देखो फिर आपका क्या प्रिंसिपल निकल के आता है. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. Let's see how many of you get this answer correctly. So there are two ways to do this question. One is आप conventional method से पहले आप उसको लेके करेंगे कि पहले simple interest में इतना रखेंगे, then compound interest में इतना रखेंगे. But एक और इसका shortcut है. The shortcut I'll tell you. Okay, Ananya is saying the third option 5,000. Okay, Ananya. Let's see others. Any other student who wants to answer this question? अनन्या का कॉपी पेस्ट मत करना, खुद से ट्राई करना उसको सॉल्व करने की, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज. Yes, अनन्या, that's what I said कि आप कर रहे हो, बट शायद बाकी स्टूडेंट्स बस कॉपी करके आंसर लिख दें. वही मैंने कहा कि सिर्फ अनन्या को कॉपी मत करना, राइट योर ओन आंसर्स एज वेल. Okay, Gurleen is also saying 5,000. Okay. Any other student who wants to try this question apart from Ananya and Gurleen? Abhishek also is 5,000. Yes. Okay. Coming to the answer. Yes, that's correct. So this is kind of a formula or a shortcut trick which you can use. So अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा हो कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना है, so how you can solve that question? You take the sum is equal to the principal. जो भी उनका डिफरेंस है उसको प्रिंसिपल के इक्वल मान लो, assume it. Look at the formula. 2 years आपको दिया हुआ था, that is n. Rate आपको पता है, that is 10%. Just put the value, get the answer very easily. आपको और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. इतना ही अगर आपको माइंड में रह गया कि वो सेम है, अगर मैं उनका डिफरेंस ले रहा हूं प्रिंसिपल, दैट इज काइंड ऑफ अ ट्रिक. अगर आपको ये सेम चीज याद रह जाएगी, आपका आंसर बहुत जल्दी हो जाएगा. अदरवाइज द अदर वे कुड बी, पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट में दोनों वैल्यूज को रखूंगा, फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों वैल्यूज को रखूंगा, एंड देन आई विल कंपेयर बोथ द वैल्यूज, जिसको करने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा. एंड कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट हाउ एक्यूरेट and how speedily you can do the calculations. So all of you who are not in the Instagram page of Hit Bullseye, the last post over there was this only. It all is a matter of the speed. If you are able to cope up with the speed in quant questions, you'll get through with your exam very easily. Okay, so that's great if you're able to solve these questions so fast, even with the conventional methods. So yes, 5,000 the correct answer. Okay, moving on. Any student who has any doubt till now? ओके, आई एम एबल टू गेट दिस ट्रिक. ठीक है, बताता हूँ. देखो, सो मैंने क्या किया इस ट्रिक में, रेट जो मेरा टाइम पीरियड था, 100 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैंने एक फॉर्मूला बना लिया अपना. ठीक है, जिसमें स्क्वायर इज द नंबर ऑफ इयर्स, दैट इज 2, एंड रेट मुझे पता है, दैट इज 10%. ओके, इसको मैं स्क्वायर करूंगा, मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस, वट एवर डिफरेंस दैट इज गिवन टू मी. सो अंडरस्टैंड इन दिस फॉर्म, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 100 अपॉन r होल टू द स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस. ओके, 100 आपका पता, 100 इंटू 100 का स्क्वायर हो गया, और नीचे r था आपका 10, तो 10 इंटू 10 हो गया. Difference was given as 50. So that is it. This is the only trick. So if you can remember this trick, कि 100 upon r whole square into the difference is the principal amount. That solves your purpose. आप ऐसे भी कर सकते हो, otherwise go with the conventional method. अगर आपको थोड़ा भी confusion लगता है कि नहीं सर इससे मैं confuse होंगी, go with the conventional method. So tricks are always for those students जिनका base clear है, जिनको अच्छे से पता है कि हाँ this is the basic thing, ये मेरा clear है, अब मैं कुछ tricks लगा के इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकता है या कर सकती हूँ. सो ट्रिक्स हमें तभी यूज करनी चाहिए अगर हमारे बेसिक्स सारे क्लियर हो.
concepts हमारे सारे clear हो, हमने काफी practice कर लियो, then you can come to the tricks. So Gurleen and Astha, is it clear now? Please comment down if it's clear. Okay. Astha, please comment. Okay, great. Moving on. The simple interest on a certain sum for 3 years is rupees 225. And the compound interest on the same sum for 2 years is rupees 165. Find the rate % per annum. Again, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीज यहाँ पे दी हुई है, एक में 3 साल है, एक में 2 साल है, एक का इंटरेस्ट 225 है, एक का इंटरेस्ट 165 है. ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट. Two is the number or year, or it will always be 2. 2 is the number of years, Manoti. 2 is the number of years. Try it. Try this question. The simple interest on a certain sum of money for 3 years is 225. Try this question. I'm expecting Astha, Gurleen, Manoti, Ananya to type the answer fast. Let's see fastest finger first. Sorry, my throat is a little bit sore today. Please bear up. Waiting for the answer, guys. इतना लंबा नहीं है ये. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. कन्वेंशनली करोगे तो भी इतना टाइम नहीं लगेगा. ट्राई. Okay, I'm giving another 1 minute. Ananya, are you able to do it? Manoti, Astha, Gurleen, Abhishek. Fine. I'll take the answer. Okay. So we'll use the basic unitary methods of SI for 3 years is 225. ठीक है. अब हमें पता है कि 225 है. That means कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है. मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट चेंज नहीं होता सिंपल इंटरेस्ट में. तो हमारा 1 ईयर का कितना होगा 75. 225 डिवाइड बाय 3 दैट इज 75. और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हमेशा सेम रहेगा. That means compound interest for 1 year will also be 75. But compound interest for second year will be 90. Do the calculation, you'll come to know. For second year, it will again be 75. Now हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा है. डिफरेंस आपने निकाल लिया 15. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फाइनली क्या आएगा? The difference upon the CI for first year. This will give your answer as 20%. So this kind of a trick, a shortcut where you can do it. अगर आप इसको कन्वेंशनली करोगे तो भी आपको सेम यही आंसर मिलेगा, बट ये आपका एक शॉर्टकट है कि डिफरेंस अपॉन द सीआई फॉर द फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100. दैट इज योर आंसर. I am doing some calculation mistake, just checking. No issues, Ananya. I have given out the answer. I hope you are able to understand it. Okay. Great. So the concept is clear over till now. Just 2-3 more questions, then I'll come to the previous questions. Though there were only 4 to 5 questions. Let's see. Okay, moving on. Mihir's capital is 5/4 times more than Tulsi's capital. Tulsi, I don't know. ये शायद किसी serial character के नाम मुझे लग रहे हैं. Even though when I was writing the question, I felt that way. Tulsi invested at capital at 50% per annum for 3 years. That is compounded annually. Now you have to be very careful about कि आपको क्या question में पूछा गया है. So compounded annually. So that means no change in the rate, no change in the time. You have to keep it as RN only. At what rate of percent per annum simple interest would Mihir invest his capital so that
After 3 years, they both have the same amount of capital. Try this question. बहुत easy है. Just 2-step question it is. एक में अगर आपने assume ढंग से कर लिया, you will get through it. Very easy question. यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक खेलना होगा with the capital. I'm giving the hint. So 5/4 है, उसको एक whole number आपको बनाना है. How you will make it, that's totally up to you. Try. Manoti says 50/3. Ananya says 16.6. That is same only. 50/3. Okay. Any other answer? So out of so many students, just 4 students are trying. This is so bad. Not acceptable at all. At least try. गलत आता है तो भी क्या? गलती करोगे तभी तो सीखोगे. Yes, good. That's 16.6x. So instead of muting or unmuting, try to solve the questions. That will help you out. All the students who are in the session on YouTube as well as on Zoom. क्वेश्चन सॉल्व करो तभी कुछ करने कभी तभी कुछ सीख पाओगे. हर हफ्ते मैं या कोई और फैकल्टी यहाँ पे आके आपको सिर्फ ये लेक्चर्स करा दे, दैट डजंट सॉल्व द पर्पस. तो इसीलिए मैं अपनी क्लास में स्पेशली बोलता हूँ कि सॉल्व करो क्वेश्चंस को. नहीं आएगा उसके बाद मैं बताऊंगा. मैंने आंसर भी मैं लिख के लाया, अदरवाइज मैं आंसर भी क्यों लिख के लाऊं, बस एक पेज पे लिख सकता हूँ. बट आई एम टेकिंग होल ऑफ द सॉल्यूशन ऑन स्क्रीन, जस्ट दैट कि अगर नहीं कर पाते हो तो मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे होना था. बट ट्राई गाइस, ट्राई. I am up for 1-to-1 free counseling sessions if you have any doubts regarding your preparation. वो आपके doubts quant के related हो सकते हैं, आपके doubts preparation के regarding हो सकते हैं, आपके doubts college के regarding हो सकते हैं कि सर कैसे choose करूं, क्या करूं. I am there to help you out. So in case if you need any kind of counseling, I'm up for a video call. Number is given over here. You just need to contact Akriti ma'am, and I'll share my schedule with her, and you'll get to me. I'll repeat the number. It's 8288823678 for YouTube people. You can note it down. It's 8288823678. If you have any doubts, any query regarding your course or how to prepare, please contact. Okay. Coming to the answer now. Yes, that was correct. 50/3. सिंपल आपको मैंने हिंट दे दिया था, आपको उन्हें होल नंबर में बनाना है. तो अगर एक तुलसी कैपिटल 4 और मीर की कैपिटल 9 है तो वहां पे आपको मीर कैपिटल 5/4 टाइम्स हो जाएगा, राइट. सिंपली इन चीजों को फॉर्मूला में पुट करो. 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r बाय 100 की पावर 3 इक्वल्स टू 9 प्लस. सेम, कुछ भी नहीं चेंज है. आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, एंड दैट इज इट. You'll get to the answer as 50/3%. Great. Congratulations to all the students who are solving the questions, especially Ananya and all everyone who is solving the questions. So great, guys. You're doing a great job. Okay. A sum was put at a simple interest at a certain rate of 6 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have earned rupees 120 more. Find the sum. Again, a very easy question, I would say. Chalo, find the sum. So आप क्वेश्चंस को x लेके भी कर सकते हो, आप क्वेश्चंस को शॉर्टकट्स के साथ भी कर सकते हो. जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप क्वेश्चंस को वैसे करो. I always say ट्रिक्स तब लगाओ जब आपको बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो. व्हेन यू नो कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, अब मेरे को ट्रिक की जरूरत है. सो मनोती, गुरलीन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. असम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. Asta, you also try. Samriddhi, all the other students who are there in the session, please try. Sahil, Aditi, Harshit, Lakshmi, Greg, please try the question, guys. इस लेक्चर को आके यहाँ पे बस एक ऐसे मूवी की तरह देखने से कुछ नहीं मिलेगा. You should do it. करोगे खुद से तभी सीखोगे. Do mistakes. I am totally fine with mistakes, but do it. गलत आंसर करो, but करो.
Okay, waiting for the answer. No answers on YouTube. YouTube audience, please wake up. I know it's afternoon. You guys must be feeling sleepy, but it's time to learn something, right? Buck up and answer the questions. Answers, answers, answers. It's a very basic question. No need for some tricks or something like that. 24,000. Nah. Let's see. Any other answer? People are still joining the session. That's good. But then please, guys, understand the importance of time. It's 4:35. You're 35 minutes late in a session of a 45 to 50-minute session. You guys are 35 minutes late. Manohar says, Manoti says 1,000. Yes, yes, the answer is 1,000. Ananya, please see kahan pe galti hui hai. Okay, so this is the answer. So let P be the principal and X be the original percentage rate of interest. The interest for 6 years will be amount to 6p multiplied by 100. If the rate is increased by 2%, the new interest then becomes this. The difference between the two is this. This is equal to rupees 120. LHS, RHS, put all the values. Either so leke jao, cut down, simplify your equations, and your answer is 1000. Yes, Manoti and Manhar, you're correct. Great. सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. तो कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है उसकी पूरी इक्वेशंस आपको बनानी होती हैं. अगर आपको कोई शॉर्टकट नहीं मिल रहा है, जस्ट राइट इट डाउन. जो भी आपको चीजें पूछी गई, जस्ट राइट इट डाउन. उन चीजों को बस इक्वेशंस बनाओ एंड इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है. दैट इज इट, नथिंग यू हैव टू डू. सो इससे ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था. पूरा थ्योरेटिकल इसमें मैंने लिखा हुआ है, पूरी मैंने इक्वेशंस इसमें आपको दी है. सो दैट इज इट. इससे ज्यादा डीप इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं आप. Next question. An amount of rupees 8,000 is lent out in two parts such that the interest on first part at 15% for 4 years is equal to interest on second part at 4% for 10 years. Find the sum lent out at 15%. This is the last question of the conceptual questions, the different type of questions. तो यहाँ पे आपको एक amount दिया है जो two parts में invest किया था. First part 15 years, 15% 4 years. Second part is 4% 10 years. Now you have to calculate in between कि 15% में कितना उसका sum lent out होगा. So basic है question, but still थोड़ा सा complicated भी आपको लग सकता है while solving. Answer is in 4 steps, max to max 4 steps. Otherwise 2 to 3 steps. Let's see कौन करता है. Okay, Sharat KV. In the top right corner, it is written that had it been, and the second line it is written as find the sum. That's it. The rest of the question is visible. Ananya says 4,800. Okay. Any other answer? This I like. Different answers. 4,800, 3,200. Yes, there's something I like. तो मेरा भी इंटरेस्ट बनेगा कि हाँ मैं भी बताऊं बच्चों को कि हाँ क्या गलत है क्या सही है. ग्रेट. मधुसूदन कुमार इम्प्रेस 3,200. ओके, लेट्स सी कोई अगर और आंसर करना चाहता है तो.
Just 10-15 more seconds. If anyone wants to answer this question, please comment down. Write your answer. कॉपी करके मत देना मुझे अनन्या, गुरलीन, मनर या मधुसूदन का, अपना खुद का आंसर. Any other answer? Okay, fine. Sorry Madhusudan, the answer is 4800 only. Just see आपने कहाँ पे गलती करी. Okay. So in the solution we have taken P with the sum lent out at 15% and Q with the sum lent out at 4%. Equation हमने बना ली है. Therefore P is to Q हमें क्योंकि रेशियो निकालना था, P is to Q हमें निकाला, तो the total sum of rupees 8,000 is to be divided in the ratio of 3:2 because that is our main objective, right? So this way the first sum will be 8,000 into 3 by 5, that is 4,800. A very basic question I would say, but you need to understand the language of question. If you can understand the language of question, the question will be solved in seconds, I would say. Not even a minute it will take. It will be solved in seconds. Yes, Manoti, right? 4,800. हो सकता है आपने इसको और easy method से किया हो सकता है आपने इसको और typical method से किया हो. I am trying कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बता सकूं जिसमें आपको बेसिक्स भी समझ आ जाए, जिसमें आपको ट्रिक्स भी समझ आ जाए. Again, all of you, if you face any kind of doubts, Telegram groups are always there to help you out. You can just come to the Telegram group, post your doubt, tag the quant trainers or any other faculty if you have any doubt regarding to some other subject, and we'll be there to help you out. Apart from this one-to-one online session is always available. Right now, I have counseled in the past 2 weeks. I've been sending this message to all the students, and I believe I've counseled over 20 students. 20 से ज्यादा बच्चों से मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ एंड दे आर वेरी इंटरेस्टेड. उनको बहुत अच्छा लगा बात करने का एंड दे वर फीलिंग क्वाइट रिलैक्स. दिस इज द फीडबैक व्हिच आई गॉट फ्रॉम देम. सो आई कैन आल्सो डू दिस फॉर यू गाइस एज वेल. इफ यू फील एनी डाउट, any problem in learning, in your pattern, just connect with me. In fact, even if your friend also is in any kind of doubt, so जब मैं भी पढ़ता था तो मेरे भी काफी सारे फ्रेंड्स होते जिनको कुछ ना कुछ डाउट्स हमेशा रहते थे. So I also used to give out my friend's number to my faculties which I am comfortable with talking to. So they used to also get the benefit. Sir, I have a doubt in this question. Yes, Madhusudan, please ask your doubt. Please comment down. Once again review. Yes, please tell me. So let the P with the sum lent out at 15% and Q with the sum lent out at 4%. मैं कहाँ से review करूँ आप please मुझे बताओ. The answer is 4,800 only. Sir, I'm a North Math student and quant is a real trouble for me. Will IPM will still be a good option for me? Gurleen, depends. Like you are answering back to back questions, so that is definitely giving me the vibes that you can answer or you can appear for IPM. But let's connect more on this number. Please send a WhatsApp text and she will add you in the group. सर Yes, Madhusudan. पी रेशियो क्यू सर, तो सर पी रेशियो क्यू किस प्रकार निकाल लिए सर आप? E raised to How Q. can आप I देखो find? मैंने ऊपर इक्वेशन बनाई हुई है ना, आप ऊपर देखो सेकंड लाइन में. सो px 15 into 4 equals to 4 into 10, जो मैंने सम ये रेट और आपका टाइम पीरियड जो है उसके रेस्पेक्ट में मैंने आपका रेशियो निकाला है. सर पी रेशियो क्यू का मतलब पी बाई क्यू. यस. तो क्यू के साइड जो 4 into 10 है वो ऊपर में रहेगा और पी के साइड जो 15 into 4 है वो नीचे आ जाएगा सर. तो 2:3 होना चाहिए सर, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट में. वंस अगेन सर रिव्यू कीजिए. ओके, ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से रिव्यू करूंगा एंड फिर आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट करो एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस. ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पे एक बार मैसेज करो अभी, क्योंकि बिकॉज सेशन का भी टाइम हो रहा है. आई विल रिव्यू दिस. ओके, मैं एक बार और देख लूंगा. ठीक है, थैंक यू. Now, this is the previous year questions which were there in the IPMAT exam. So, Gurleen, I hope आपकी query मैंने solve कर दी है. You can also connect back to me on Telegram. So, all the students जिनकी बहुत ज़्यादा queries हैं, पहले Telegram पे connect कर लो, and then we can have a one-to-one video call session as well. So, because already the time is running and I have to solve like 3-4 more questions because ये आपके main questions हैं, यही आपके previous year में आए थे, तो आपको थोड़ा सा और इन पे ध्यान देना चाहिए. Basic questions हैं, जितना आपने concepts अगर समझ लिए अच्छे से तो you can definitely achieve it. So the present sum of money amounts to rupees 800 in 2 years and to rupees 920 in 3 years. Then the present sum of money is 420, 690, 560 or none. Please try. Very basic question and it was there in, I believe, Rohtak. Please try.
Okay, Harshit says none. Madhusudan says 569. 569. Okay, 560. वही मैं सोचूंगी 560 तो ऑप्शन नहीं था, that's why none. Okay. Any other answer? पीछे रह गए पुराने वाले बच्चे. अनन्या says 1040. Okay. Manhar, Gurleen, Manoti. What about you? Okay. Gurleen says none. Okay. Now this is an active participation. अब पढ़ाते हुए भी अच्छा लगता है and पढ़ने में फिर आपको इंटरेस्ट आता होगा. Okay. So a lot of you have answered. Okay. Let's see the answer क्या होता है. This is the answer. Now see आप लोग कहाँ गलत हुए, कहाँ पे you did a mistake. So Madhusudan was right. He answered this question in seconds. So that is great. अब now see आप कहाँ पे गलत हुए. So question में क्या दिया हुआ था? If under simple interest, P plus 3i will be 920. P plus 2i will be 800. Solving this, बस आपको क्वेश्चन को, अपनी इक्वेशंस को जितना सिंपल बनाओगे उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा, उतना क्रिस्प आपको आंसर मिलेगा और उतना करेक्ट आंसर मिलेगा. So you always don't need to bother about कि मैं किस तरह से अप्रोच करूं. You just need to be very clear about the concepts. You need to be very clear about the base. अगर आपका बेस सही है ना तो आपका कंसेप्ट और इक्वेशन कभी गलत होगी नहीं. सो जहां पर भी हम एक्स लेके सॉल्व करते हैं, हो सकता है वहां पे हमें एक्स लेने की जरूरत ना पड़े. इन माय प्रीवियस सेशन मैंने आपको बताया था कि जहां पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रही हो, टेक 100. एज्यूम मत करो एक्स, टेक 100. दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल. 100 से आप एज्यूम करके चलोगे, आंसर आपका गलत नहीं होगा in maximum of the cases and in particular type of questions, right? So वो प्रैक्टिस के साथ आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में मैं एज्यूम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. और ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में वो ट्रिक काम हो जाए, बट देयर आर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो बी केयरफुल. गुरलीन, मनोती, अनन्या, दिस इज द सॉल्यूशन. मेक योर इक्वेशंस एज सिंपल एज पॉसिबल. रेट और इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जो था, हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, रेट को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो ट्राई टू मेक योर इक्वेशन द फॉर्म की जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कैंसिल आउट कर सकें. ओके, ओके, मूविंग ऑन. Bhavani invested an amount of rupees 13,900 divided in two different schemes. उसी तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, जिसमें उसके टू पार्ट्स थे. A and B at a simple interest rate of 14% per annum and 11% per annum, respectively. If the total amount of simple interest earned in 2 years be rupees 3,508, what was the amount invested in scheme B? Try this question. And I want a correct answer this time. Gurleen, Manoti, Ananya, I want a correct answer. Madhusudan, please try this question. Please try this question, guys. Ananya says 6,400. Okay. Gurleen, Manoti, Madhusudan. I haven't heard from Samriddhi, Sahil. You guys don't want to try even the questions? Great, Aditi. Great. Good job. Greg, you guys don't want to answer? That's totally fine with me if you don't want to answer, but still you are losing something. You are lacking somewhere if you don't want to answer, if you are not willing to. अगर कोई भी डाउट्स हैं, सो ये 1-to-1 सेशन इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ. अगर आपको डाउट्स है ना अपने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, सो यहाँ पे ना आंसर करने के लिए मैं सीधा सा एग्जांपल लेता हूँ कि सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, सर मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. सो दैट इज व्हाई टॉक टू अस. नंबर इज गिवन ओवर देयर. टॉक टू अस, वील हेल्प यू आउट. आई वांट, जिस तरह से अनन्या एंड मनोती आर आंसरिंग, अदिति ने भी फर्स्ट आंसर कर दिया, एंड आई वांट यू गाइस एज वेल हु आर नॉट आंसरिंग. आई वांट साहिल एंड समृद्धि, यू आल्सो टू आंसर, राइट? ओके. 6,400. Okay, Gurleen, 6,400. Yes, the answer is 6,400 only. All the students who are not able to solve this question, please see. So let the amount be X rupees.
amount in A will be 13,900 minus x. According to the question, we're just forming the equation x multiplied by 11 into 2 by 100 plus 13,900 minus x into 14 into 2 by 100, 350x. Solving the equation, you get to the answer as x is 6400 is your value. That was it. So this is the easiest question that would come in IPM at Indore. इंदौर का क्वेश्चन है आपका. इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट करोगे? सो अभी गुलीन आप मुझसे शायद पूछ रहे थे कि सर मैं मैथ्स की स्टूडेंट नहीं हूं, बट लुक यू आर एबल टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो दैट मींस मैथ्स इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर आप क्वेश्चन कर सकते हो, इट डजंट मैटर कि आपके पास +2 में मैथमेटिक्स है या नहीं है. इट डज मैटर कि आपको क्वेश्चन किस तरह से करने आते हैं, आपको क्या समझ आता है या नहीं. सो दैट्स प्रीटी ग्रेट. ओके, मूविंग ऑन. So now Veena has to pay rupees 2,460 to Sita. In 5 months later, 6% simple interest per annum, and Geeta has to pay the same amount. Simple interest per annum after certain months if both took the same amount of loan from Sita and then Geeta paid the loan after how many months? It's a bit tricky question, but try to solve it fast. It's already, the session is about 2 hours. So please guys, I request to please solve the question very quickly if you can. Otherwise, I'll give out the answer myself. Please try soon. Jaldi se karo. Try fast. Look at the language of the question, understand the question, and just go with it. Aditi, I'm expecting an answer from you this time as well. 6 months, okay. Ananya says 4 months, okay. Ananya, be sure with your answers. So today, like आपने बहुत बार answers बदले हैं. Exam में नहीं ऐसे होगा. Have to be very sure. Okay, 4. Okay, Aditi also 4. Yes, the correct answer is 4. Great guys, great. ऐसे पढ़ाने में सच में बहुत अच्छा लगता है जब students, okay, student has entered the room, okay. Hello Hina, sorry but the session is about to get over. आप थोड़ा नहीं काफी लेट हो गए हो. Okay, so यहाँ पे is the equations. So अगर क्वेश्चन में आप देखो तो उनका वीना और गीता के लिए प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट सेम है, सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा. जस्ट मेकिंग द इक्वेशंस. हमें निकालना था उनका टाइम पीरियड कितना है. टाइम पीरियड इजीली यहाँ से 4 निकल जाएगा. हिना आप काफी लेट हो गए हो सेशन के लिए, तो आप बस देख सकते हो वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट हियर. Okay. Now, if the compound interest earned on a certain sum for 2 years is twice the amount of simple interest for 2 years, then the rate of interest per annum is -%. Now, यहाँ पे जो -% है, इसका थोड़ा सा रोल है. जब आप सॉल्व करोगे शायद आपको समझ आ जाएगा. Try this question. आपको समझ आएगा कि कहाँ पे आप मे भी गलती कर बैठो एग्जाम में. Try. एंड जो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी सोचते हैं कि मैं क्वेश्चन को कर दूं, उनसे यहाँ पे मिस्टेक जरूर होने के चांसेस हैं. Try. Answer guys, answer. %. Okay. Any other answer? Gurleen says 2%. Manoti says 2%. Any other answer? तो जो गलती की मैं बात अभी कर रहा था वो गलती ऑलरेडी हो चुकी है. अनन्या, व्हाट्स योर आंसर?
Okay. Try fast. मधुसूदन आपने ट्राई किया? अदिति आपने ट्राई किया क्वेश्चन? Manar, have you tried? Trying but could not get it. Okay, no issues, Manar. Any other student? Ananya, we're just waiting for you. Please hurry up, dear. Ananya says 4. Okay. Okay, let's see. Manar, are you a student of Hit Bullseye? Manoti, Manar, Hina, are you all student of Hit Bullseye? Do you take up regular classes or just the demo? Okay. Madhusudan, what about you? Okay. Madhusudan, are you a regular student? Okay. Great. So Manoti, how did you like the demo? Hina, आप तो काफी late आए हैं. Manoti, how did you like the demo class? Okay. Great. Thank you. Thank you so much. Okay. So for more of these sessions, we actually keep on doing these sessions. So if you want, so you can definitely attend these sessions. Everything is available on grad.hitbullseye website. I'll just type it down. You can search it. Yes. So this is the website. You can visit this website and you'll get all the informations from here. Okay. So now जो क्वेश्चन में मैं बता रहा था गलती करेंगे वो आप कहाँ करेंगे अब देखिए. So यहाँ तक आई बिलीव सबका आंसर आ गया होगा जहां पे आपने 2% निकाला है. Okay. Solving this, get to the answer as R is 2%. But आप ये भूल गए कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम भी निकालना था and that too in percentage. So उसके बाद आगे की कहानी. A equals to P 1 plus 2 की पावर स्क्वायर माइनस P. आपको दोनों का बिकॉज हमने स्टार्टिंग बताया था कि फॉर द अमाउंट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल फॉर द सिंपल इंटरेस्ट. अगेन दोनों को आप कंपेयर करोगे आपका R विल बी 200%. वहां पे परसेंट लिखा है. ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको परसेंटेज का साइन लगाया. बट अगर आप देखो परसेंट के टर्म्स में वहां पे जो डैश के बाद परसेंट है सो दैट विल मेक इट एज 200%. तब जाके आपका आंसर करेक्ट होगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स. ये कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं. तो अगर आपको 2 और 200 दिखे तो डायरेक्टली काफी सारे बच्चों ने 2 लिख दिया है. राइट. सो यू हैव टू सी कि 200% आना है वहां पे. ओके. Now we have this IPM 21 online classroom going on. The batches have just started for the law as well. We have 3 live lectures, 250 recorded concepts, 9 IPM videos as you can see on the left side of the screen. And for the law, we have these many mock tests, the recorded concepts and 4 live lectures. So if any student who is interested, जो आज demo ले रहे थे, if you feel interested to enroll for the classes, every class is very interactive just like this demo. You'll get all the opportunity, all the chances to get where you want to. So I would say because of the Diwali offer, the prices are not 39,999. It's not 29,999. It's right now as 24,999. The details for the course is with Akriti ma'am. Her number is mentioned over here in the bottom. That's 8288-23678. If any of you student wants to connect, if any of you wants to enroll with the course, go ahead, call her. She will tell you about everything that is needed to fulfill all your dreams to go to your dream NLU or to your dream IM in the management college. Okay. So that was nice talking to you all. The session, just 2 minutes I left for the session and I will end this session now. अगर आपको और भी कोई queries हो, sir, what time around to IPM mock test start? Manoti, please explain again. Manoti, time is almost up. Please connect me on Telegram. That would be better. Ananya, please text me on Telegram. I'll reply over there. ठीक है? अभी मैं सेशन बंद करता हूँ.
so that the other faculty can join. Okay. Thank you so much, guys. It was great meeting you all. Great talking to you. And जिन्होंने आज आंसर नहीं करे, I'm expecting आगे वो आंसर करेंगे. Okay, guys. Bye bye. Take care. Have a great evening. Bye.